Good evening, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Allergy team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch intensely. It may be due to the chemicals present in certain food items, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is even unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the populations suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidence is higher in older age groups. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its management. So we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Bhumika Chowdhury, live from Skin Raga Clinic, Bhiwani. She will educate us more about urticaria and its management. Dr. Bhumika Chowdhury, MBBS, she has done her MBBS from Government Medical College, Belgaum, Karnataka, MD from Government Medical College, Tanda, Himachal Pradesh. She is ex-consultant dermatologist, Aura Skin Institute, Chandigarh, ex-senior registrar, Government Medical College, Karnal, Haryana. A very warm welcome and a very good evening to you, Dr. Bhumika Chaudhary. Thank you. Thank you so much. Doctor, as today we are going to talk about urticaria, everything about urticaria. Urticaria क्या है, क्यों होता है, कैसा दिखता है. So we'll like to begin with the clarity about urticaria. What is urticaria? Urticaria क्या है? Urticaria is basically a disease which is characterized by hives or wheals. In Hindi, I want to say urticaria को बोलते हैं कि पित्त उछलना, पित्त उछल जाता है या धप्पड़ धप्पड़ हो जाता है. Now, what are these pit, dhappad, or I'll call them hives? Hives are nothing but these are superficial swellings of your upper layer of skin, which is called as dermal layers. Superficial swelling of dermis is there, and it is characterized by transudation of plasma fluid. And these swellings characteristically disappear within hours without leaving any mark. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मच्छर काटने के बाद थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है आपको थोड़ी देर के लिए, उसी तरह के size can vary. That can vary from a few centimeters to much larger lesions can appear. 2-3 निशान कोलीज करके बहुत ही bizarre shape lesions भी बना सकते हैं, and it can involve any part of your skin. कि आपके फेस से लेके ट्रंक, हैंड्स, फीट, कहीं पर भी अर्टिकेरियल लीजन्स या हाइव्स आपका अपीयर हो सकता है. और these are characteristically itchy. इनमें बहुत ज्यादा itching होती है पेशेंट्स को, और they'll usually tend to rub it. They'll again rub it and rub. So excoriation marks आपको usually urticarial patients में नहीं मिलते हैं because they don't scratch it, they'll rub it. So this is what urticaria is basically. Right. So now at least we know what urticaria is. We would also like to understand that what are the main causes behind urticaria? See, urticaria, there are two types of urticarias. One is called as acute urticaria and the other one is called as chronic urticarias. These are spontaneous urticaria basically. Spontaneous means at any time. They can occur in any part of day or at any time of your life period. These are acute if they have a duration of less than 6 weeks, and if they persist for more than 6 weeks, it is called as chronic urticaria. And then you have got something called as inducible urticaria. Inducible urticaria, which can be induced by some stimulus, which can be induced by pressure. Pressure can induce urticaria, which can be induced by cold contact or hot contact, even on contact with water or on solar exposure. These are called as solar urticaria. So these are inducible urticarias, but the most common types of urticarias are spontaneous urticarias. These are acute and chronic. Again, different causes are there. For acute urticarias, the most common causes are infections.
any kind of upper respiratory tract infections, और आपको कुछ urinary tract infection हुआ है, आपका कुछ stomach upset हुआ है, कुछ diarrhea का issue था आपको, females में discharge का issue बहुत common रहता है, and these can cause urticarias, and hepatitis B हो गया आपका, hepatitis C. So infections should be ruled out in cases of acute urticarias. Other common causes may be like drugs हो सकता है, पेशेंट ने कुछ पेन किलर लिया हो किसी चीज के लिए, कुछ एंटीबायोटिक लिया हो, कुछ वैक्सीनेशन लिया हो, तो वैक्सीनेशन के बाद भी एकदम से एक्यूट अर्टिकेरिया आपका आ सकता है. देन देयर आर सम फूड आइटम्स, कॉमन फूड आइटम्स जैसे आपके टोमेटोज हो गए, चीज, चॉकलेट्स, वेरियस नट्स, फिश, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स इनमें रहते हैं जो आपके हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली एक केमिकल होता है आपकी बॉडी में हिस्टामिन, और इस हिस्टामिन की वजह से ही अर्टिकेरियल लीजन्स डेवलप होते हैं. बट अबव ऑल दीज कॉजेस, कि ये सब कॉजेस मिलाकर भी हम 50-60% पेशेंट्स के अंदर कोई भी कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो किस वजह से हुआ है. हम जो भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो मोस्टली नॉर्मल आती है, एंड स्टिल अर्टिकेरिया इज हैपनिंग, तो वो बोला जाता है इडियोपैथिक अर्टिकेरिया. जो फिर मैंने आपको बात की क्रॉनिक अर्टिकेरिया की, अगर अर्टिकेरिया 6 वीक से ऊपर आपका परसिस्ट कर रहा है, आपको 6 हफ्ते हो गए हैं अर्टिकेरियल हाइव्स आते आते, उन केसेस के अंदर मोस्टली हम ऑटो इम्यून थ्योरी मानते हैं कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपके कुछ जो मास सेल्स हैं उनको रिएक्ट करने लग जाता है. देन अदर कॉमन डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड डिसऑर्डर्स, जिनको कुछ थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनमें क्रॉनिक अर्टिकेरिया का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. ये कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो आपकी बॉडी में, कुछ हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हो, आपको टूथ डेंटल केरीज हो किसी तरह की, तो इन सब चीजों में भी क्रॉनिक अर्टिकेरिया, बट लार्जली इट इज इडियोपैथिक. वी कांट आइडेंटिफाई द कॉज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. राइट, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं और कई बार तो कॉजेस पता ही नहीं चलते हैं कि क्यों ये अर्टिकेरिया हो रहा है. डॉक्टर, आपने बताया कि रैशेस होते हैं, रेड होते हैं, उसमें इचिंग होती है और उसको रब करता है जो सफरर है, उसको स्क्रैच नहीं करता. तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे हम पता कर सके कि अच्छा अर्टिकेरिया कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक लाइक? I told you it looks like just swellings होंगी आपके फेस पे, आपकी स्किन के ऊपर सुपरफिशियल स्वेलिंग्स होती हैं ये. These may look pale in color और slightly pink in color होती है. Apart from it, itching रहेगी इसके अंदर. And sometimes it can be associated with angioedema. Angioedema is another term. जब यही swelling आपकी superficial यानी कि upper part of layer को छोड़कर deeper dermal tissue में चली जाती है, उसको हम angioedema बोल देते हैं कि थोड़ी सी डीप हो गई है स्वेलिंग्स. और एंजियोएडिमा कॉमनली अकर्स आपके लिप्स पे हो गया, आईलिड्स पे हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, आपके हैंड्स पे हो गया. एंजियोएडिमा कैन बी एसोसिएटेड विद अर्टिकेरिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर इन देयर लाइफ टाइम. तो अराउंड 40-50% केसेस के अंदर आपका अर्टिकेरिया एंजियोएडिमा के साथ एसोसिएटेड हो सकता है. ओके, एंड इज इट एलर्जी? The causes of urticaria can be both. It can be non-allergic as well as allergic. So allergic causes जो मैंने आपको बताया कि कुछ infection हुए हो आपको किसी तरह का, post vaccination आपको हो गया, due to food additives और food allergens, जो shellfish, nuts हो गए आपके, cheese can cause. So these are some causes which are allergic causes of urticaria. And there are some non-allergic causes of urticaria like certain drugs. जो भी आपके पेन किलर्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं, तो दीज आर सम नॉन एलर्जिक कॉजेज ऑफ अर्टिकेरिया. सो इट कैन बी बोथ एलर्जिक एज वेल एज नॉन एलर्जिक. ओके, और डॉक्टर अगर अर्टिकेरिया को ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, तो व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस? The most important thing for urticaria is that it impacts your quality of life. Okay, as such it is not very harmful until and unless बहुत सीवियर एंजियोएडिमा हो जाए पेशेंट को. एंजियोएडिमा जब तक आपका लिप्स पे है, आईलिड्स पे है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन आपका थ्रोट का इनर पार्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड एज लैरिंक्स. लैरिंक्स आपका कॉमन पाथवे हो जाता है जहां से फिर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, जिससे आप ब्रीथ करते हो, एयर इनसाइड आउटसाइड आप इनहेल और एक्सहेल करते हो. तो जब वो लैरिंक्स पे भी स्वेलिंग आ जाए, देन यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ. आपका वो रुकावट आ जाएगा, जो आपका ट्रैक्ट है, यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ, यू वोंट बी एबल टू एक्सहेल. तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है
अपार्ट फ्रॉम इट जो नॉर्मल अर्टिकेरियाज होते हैं दे आर नॉट एज सच बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, बट इचिंग होती है, इचिंग कैन बी अ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम। तो इचिंग वाला प्रॉब्लम काफी रहता है। समटाइम्स पेशेंट आर नॉट एबल टू स्लीप, जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं अचानक से अर्टिकेरियल लीजन्स आ जाते हैं, देन पीपल टेंड टू पॉइंट आउट कि तुझे ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है। और इचिंग बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम रहता है अर्टिकेरिया के अंदर। Yeah, I can completely understand what you're saying because you're continuously itching. So, of course, it will cause you a lot of discomfort, irritation, frustration. Going out, socializing, etc., will also suffer due to it. Definitely. Right. Okay. Now, So it doctor, I would infects. also, yes. I would also like to know that, as you mentioned, there are two types of urticaria. Broadly, we can say we have acute and we have chronic. Now, in these cases, are the chances are there that the urticaria is completely curable and the hives will go away forever? No, I won't say like it's completely curable. It can get cured by itself. We can control urticaria, but we cannot completely eliminate it. Acute urticaria usually have a good prognosis because it is an episodic kind of thing कि आपको एक episode आया, sometimes you take medicine for 5 days, 10 days, वो दोबारा happen, it doesn't happen again. And sometimes it may recur, आपको थोड़े टाइम के बाद intermittently कोई एक episode आए तो आए, otherwise नहीं भी आ सकता है. But the problem lies with chronic urticarias. जो urticaria 6 weeks के बाद persist कर रहा है, उसके अंदर हमें मेडिसिन थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखनी पड़ती है. We need the patient to take those medicines for a longer period of time, and then gradually we taper it. So that is one thing, and sometimes it can persist for months, for years also, but eventually it goes off. Right. तो अगर सही समय पे इलाज लेंगे, भले ही इलाज लंबा चले लेकिन आराम जरूर मिलेगा. डॉक्टर जी, कई बार ऐसा होता है, मैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया के केस में कह रही हूँ कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ दिनों में उसे आराम मिलने लगा दवाइयों से, और हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट को वहीं छोड़ दे, उसको लगा अब हो गया, ठीक हो गया. कुछ दिन बाद फिर से सिम्टम्स दिखे, प्रिस्क्रिप्शन उसके पास है ही, वो जाके केमिस्ट की शॉप से वो वापस दवाइयां ले सकता है, फिर से वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकता है, फिर से हो सकता है उसको आराम मिल जाए. अगर वो ऐसा ही करते रहे, क्योंकि आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं, तो क्या ये सही है या ये खतरनाक हो सकता है? आपको हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए कि आपको वही मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है, या उस मेडिसिन के क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. Because now there are some newer medicines also coming जिनके less side effects होते हैं as compared to previous medicines. क्योंकि जो भी अर्टिकेरिया को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन होती हैं आपकी कॉमनली जो पेशेंट्स लेते हैं, उनमें दिक्कत क्या होती है, सेडेशन का बहुत कॉमन इशू रहता है. तो इफ समवन इज ड्राइविंग और उस टाइम पे उसको नींद आ जाता है, so it can be harmful also. So you should always consult a dermatologist before taking your medicines. And many a time it happens that, right, कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए आर्टिकेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए भी बहुत आम, क्योंकि लोगों को पता है कि एंटी एलर्जेंस क्या होते हैं, एक एंटी एलर्जन ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे, आराम हो जाएगा, तो एक आध दिन ऐसे भी वो चलाते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन से. वो ठीक है? वो भी ठीक नहीं है. मतलब अगर आपको एपिसोडिक हुआ है, स्पेशली एक्यूट अर्टिकेरिया, आपके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपने कुछ एंटी एलर्जन ले लिया, एपिसोडिक में चल जाता है कि ठीक है चलो 5 डेज के लिए कुछ, बट इफ द सिम्टम्स आर परसिस्टिंग और आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको अपनी मर्जी से नहीं लो कि आपका जब मन किया आपने 10-15 डेज के लिए यू टुक दोज मेडिसिन एंड देन यू लेफ्ट इट. तो इसका एक प्रॉपर कोर्स रहेगा, वो अगर आप रेगुलर रखोगे तो there are increased chances that your urticaria will wane off easily. Right. So it's important, viewers, that in case you have these symptoms, in case you're suffering from urticaria, please go and consult your dermatologist, because if you'll go on time, if you'll reach early, then chances are there that your treatment will take or consume less time. So please go, don't suffer in silence or in isolation. Please go and talk to your doctor. That's important. A dermatologist, of course, in this case. Doctor, I would also like to know that जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से बार बार इचिंग होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंट ऑफ आर्टिकेरिया है उनको बहुत स्ट्रेस भी हो जाता होगा. एक
राइट और एक सवाल मेरा ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत दूसरी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो क्या आर्टिकेरिया भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है? कैन आर्टिकेरिया बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस? Yes, stress can precipitate your chronic urticarial patients. So stress is not the cause for urticaria, but it can definitely exacerbate or precipitate the symptoms of urticaria. तो वो एक इशू, बिकॉज इतना क्रॉनिक डिजीज रहता है तो पेशेंट्स किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में दे जस्ट गॉट फेड अप कि अगेन इट इज हैपनिंग, मैं 2 दिन मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, उसके बाद अगेन इट इज हैपनिंग एंड हैपनिंग. सो इट रियली इम्पैक्ट्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे गेट स्ट्रेस्ड. Sometimes they are not able to sleep properly, they are not able to eat properly because someone had advised them about certain food restrictions, or they are not eating anything. Doctor, I left this thing also, I left this thing also. And you live for food, कि आप कमाते हो खाने के लिए, तो अगर आप जो चीजें इंजॉय करना चाहते हो वही आप नहीं खा पा रहे हो, तो इट रियली एड्स अप टू देयर स्ट्रेस. Right. You're absolutely right. And that reminds me that many a times people make a blanket list that, okay, people normally get allergies with cashews or nuts or egg or seafood. So I'll avoid all of them, even if I have not, experienced any kind of allergy with them. This also happens. And especially if a person is suffering from urticaria or anything close to it, then they'll definitely, shut down everything from their kitchen or pantry. So how good or bad that is? It's really bad. Like जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं इस तरह की चीजों में, the most common perception is लोग बोल देते हैं कि आप खट्टी चीजें नहीं खाओ, या आप मिर्ची वाला स्पाइसी थिंग्स आप नहीं खाओ कुछ भी. तो as such we dermatologists usually don't prescribe these food restrictions. तो फूड रिस्ट्रिक्शन वहीं पर होगा जहाँ पे पेशेंट आपको डेफिनेटली बता रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब, जब भी मैंने नट्स खाए हैं, वेदर ग्राउंड नट्स हो गए आपका या आपका कैशू नट्स हो गए, मैं जितनी बार लेता हूँ मुझे उतनी बार अर्टिकेरिया हो रहा है, देन डेफिनेटली यू नीड टू स्टॉप दोज नट्स. उसके केसेस के अंदर दैट इज कंफर्म्ड एलर्जी टू दोज फूड आइटम्स. बट आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाओ जब तक कि आप खुद उस चीज को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो. मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आए, लाइक वन ऑफ माय पेशेंट, शी वाज लैक्टेटिंग कि उसको उनको प्रेगनेंसी में अर्टिकेरिया स्टार्ट हुआ. एंड प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, लैक्टेटिंग में आपकी एनर्जी डिमांड्स, तो आप वो फूड आइटम्स और वो सब कुछ नहीं खा पाओगे. तो शी वाज रियली डिप्रेस्ड एंड शी वाज लाइक हर क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज वेरी मच डिक्रीज्ड, बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे वो. I started her on medications and I told her you can eat everything which you want to eat. आप खट्टा खाओ, आपको जो भी पसंद है. हाँ, कुछ पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि दिस इज अगेन एंड अगेन एक्सरबेटिंग योर अर्टिकेरिया, आप वही अवॉइड करो. उसके अलावा देयर आर नो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस की जो आपको बंद करना ही. राइट कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने अंडा खाया, मुझे एलर्जी हुई, अगली बार खाया एलर्जी हुई, तो मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा मेरी बॉडी शायद इसको लेके एलर्जिक है. और आपने अंडा नहीं खाया तब भी आपको एलर्जी हो रही है, तो it doesn't correlate. वो अंडे की वजह से हो रही है. how can you tell about that? तो वी आर आवर बेस्ट जजेस. तो आपको पता है कि आपकी बॉडी किस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रही है. और क्या डॉक्टर ऐसा भी है कि अगर एक बार एग खाना या जिससे भी एलर्जी हो रही हो वो खाना बंद कर दिया तो लाइफ लॉन्ग उसे बंद ही रखना पड़ेगा, कभी शुरू नहीं कर सकते, या फिर धीरे धीरे हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए? बेटर रहेगा कि आप उसे बंद ही रखें, बिकॉज समटाइम्स IgE प्रेसिपिटेटेड रिएक्शंस होते हैं एंड दे कैन लीड टू सीवियर एनाफाइलैक्सिस आल्सो. ये आपका सीवियर एंजियोडीमा या सीवियर टाइप ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है बॉडी में, व्हिच कैन लैंड यू अप टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी में आपको पहुंचा सकता है. Right. So it's better to avoid what is bothering us. Doctor, one more thing. Many patients complain that their hives or urticaria get worse during night. तो ऐसा भी होता है क्या? Some patients may complain कि उनका अर्टिकेरिया नाइट में ज्यादा आता है. It can be due to some things कि रात में पेशेंट ने कुछ ऐसा खाया हो जो डेली बेसिस पे उनकी चल रही है, या इफ समवन इज टेकिंग मेडिसिन्स रेगुलरली कि नाइट डोज उन्होंने लिया, और एनीथिंग व्हिच हैव कम इन कांटेक्ट कि वो जब रात में सोए. इट कैन बी सम इंसेक्ट बाइट्स आल्सो, और एनीथिंग व्हिच कम इन कांटेक्ट ड्यूरिंग नाइट आल्सो, सो इट कैन लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ अर्टिकेरिया. But it is not always कि अर्टिकेरिया नाइट में ही आएगा. It can happen at any time of day. Okay. And does it make a patient tired?
Yes, as it affects your quality of life, it doesn't let you sleep. So sometimes you feel tired, you feel stressed out. So that is one thing. So you can experience some fatigueness or some symptoms like this. Okay. Many times people associate allergies related to skin or any issues related to skin with contagious, like उसे हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा. Urticaria को लेकर क्या है? Urticaria is definitely not contagious. Urticaria जिसको हुआ है उसी की प्रॉब्लम है, उस तक ही रहे. किसी और को होनी है, it will happen due to their own system, but not due to the person who is already having urticaria. So it is definitely not contagious. That's a good thing, and we should make a note of it that urticaria is not contagious. So if you have somebody who's suffering from urticaria, make sure that you take or convince them to go and seek doctor's advice. It's not contagious, so please make a note of it. One more thing, doctor, that many patients have recently in last 2.5 years complained that they have got hives after having COVID, or hives as a symptom of COVID. What's that? Urticaria can happen after COVID also. Like it can happen after any bout of acute infection. It's not only COVID. If you've got a just normal flu, it can also precipitate your urticaria. If you've got your stomach upset, or if you've got a urinary tract infection, you can get urticaria. So definitely COVID can also be labeled as a cause of urticaria. And COVID vaccination also can precipitate urticaria, but it doesn't mean that you won't take COVID vaccination. So these are some side effects which can be easily controlled and they won't persist for long. Okay, so that's the good thing, that they won't persist for long. So, for example, I went for the first dose and then I had, those urticarias or rashes. Then before the second dose, can I consult a doctor so that I can take some medication to, lower down the symptoms second time? Yes. If you got the urticarial rash before, like after first dose of vaccination, and before second dose of vaccination, you can definitely consult a dermatologist. They can prescribe you some medications or some injectables also before taking up second dose. One more thing that I would like to clarify is urticaria genetic? Can it be genetic? There are some causes, especially angioedema, not urticaria, but angioedema. I was telling you about angioedema, deep swellings of which commonly occur over your lips, over your eyelids. So these can be hereditary. There are certain enzymes in your body. If you lack on those enzymes, then definitely it can have a genetic or hereditary pattern. Okay. And what are the treatment options available? क्या अर्टिकेरिया के लिए जब किसी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में हम see, we have two kinds of treatments. One is symptomatic treatment and other thing is targeted therapies. So symptomatic treatment is most commonly followed procedure for urticarias. There is a drug called antihistaminics. Because urticaria का जो pathogenesis होता है, it all revolves around your mast cells and histamine. आपकी स्किन में कुछ सेल्स होते हैं which are called as mast cells and they release a chemical which is called as histamine. And this histamine आपकी blood vessels को dilate करता है और उससे जो oozing होती है, extra fluid आपकी स्किन में deposit हो जाता है and which leads to hives. तो हम हिस्टामिन को रोक देते हैं कि this histamine won't be able to act properly. These medicines are called as antihistaminics and these are generally safe medicines, very safe medicines. Sometimes with just one dose daily your urticaria is controlled. If it is not getting controlled with a single dose of antihistaminic and especially non-sedating antihistaminics, then you can increase the dose of these antihistaminics up to 4 times also. But don't take them like you don't self-prescribe them. Just visit a dermatologist if your urticaria is not getting controlled with a single or some simple doses of antihistaminics, which are available over the counter in our country. Then in some cases, if it is not getting controlled with your antihistaminics, it is so severe, then we can prescribe some steroids also. We can go to some other immunosuppressive medicines also if needed. Okay. So these are the treatment options available for urticaria. Now we have a question from one of our viewer on the similar line. Vikas Parihar is asking, my wife has skin allergy urticaria for more than 6 months. Took many treatments,
but not fully cured. Again and again, she is getting it. Is it fully curable? It is curable. It will get cured by itself. So these medicines will give you symptomatic relief, and these medicines will improve your quality of life. You will feel happy after these medicines कि आपको पूरा दिन कोई arterial rash नहीं आया है विकास आपकी wife को. So she'll be happy about those things. So I'll tell her to take the medicines on advice of on the advice of dermatologist continuously, and don't break the course. आप ऐसा नहीं करो कि आप 3 दिन के लिए ले रहे हो या आपने 15 दिन ली एंड देन यू थिंक कि ओके अब मैं ठीक हो गई हूँ एंड आई लीव दोस मेडिसिन, देन डोंट डू इट. यू माइट नीड टू टेक दिस मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल गो अवे maybe within a year, maybe 2 years it may take with some patients. So everybody responds differently to urticaria. Right. We have Paramveer Singh asking, what is the best treatment for chronic urticaria? Best treatment, again, antihistaminics are the commonly used and usually best treatments because they don't have side effects and can be used for a longer period of time. Right. Himanshu Batra is with us asking, Doctor, can urticaria be caused by sun exposure? Yes, urticaria can be caused by sun exposure. Whenever a person is exposed to UV radiations, then within minutes to hours later, you can develop urticarial hives, especially over the photo exposed areas. कि जैसे किसी ने वॉच पहना है तो जहां वॉच पहना है वहां पर अर्टिकेरिया नहीं होगा, जो बाकी सन एक्सपोज्ड एरिया था वहां पर यू मे डेवलप दोस हाइव्स. सो दिस इज कॉल्ड एज सोलर अर्टिकेरिया. तो कुछ ऐसा है जो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी कैन डू? फोटो प्रोटेक्शन, बेस्ट थिंग इज फोटो प्रोटेक्शन. कि जब आपको पता ही है कि सन एक्सपोजर से आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, तो बेस्ट थिंग इज यूज अ गुड फिजिकल सनस्क्रीन एंड ट्राई टू कवर योर हैंड्स और एक्सपोज्ड पार्ट्स. Carry an umbrella with you. So these are simple measures which will help you to fight out the solar urticaria. Okay. We have Faizan Mir with us asking, can you please suggest precaution in rainy season for urticaria? In rainy season, as such, rainy season won't cause urticaria. If there is a type which is called as cholinergic urticaria or sometimes cold contact urticaria. जब आपकी सुबह की ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस केसेस के अंदर पेशेंट्स में डेवलप स्मॉलर लीजन्स की कुछ अर्टिकेरियल की लीजन्स आपको डेवलप हो गए, देन यू नीड टू अडेप्ट टू दैट एटमॉस्फेयर. आपको अगर पता है कि बाहर ठंड है तो ट्राई टू अवॉइड गोइंग इनटू द रेन्स. आप अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करो और वियर समथिंग प्रोटेक्टिव जिससे आपको बारिश की बूंदें नहीं लगे. एंड इफ इट इज स्टिल बॉदरसम देन विजिट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. Definitely. Priyanshi Verma is asking, I have a red spot on my hand. How can I reduce it naturally? I need to see that red spot, like what kind of red spot is this. So without seeing that, I won't be able to tell you कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो. तो आपको चेक कराना पड़ेगा कि किस तरह का रेड स्पॉट है और इसके लिए क्या किया जा सकता है. Because red spots can occur in so many diseases. So मेरे माइंड में एक के बाद एक डिसीज आती रहेगी. So I won't be able to tell it without checking it. राइट. तो इसके लिए आपको प्रियांशी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा. आपको स्किन रागा क्लिनिक आना पड़ेगा. It is opposite Red Cross, Chiriyaghar Road, which is Zoo Road, Bhiwani. So you can definitely consult me. Right. So you know now, Priyanshi, where to go, how to consult Dr. Chowdhury. We have Lalit Sharma asking, urticaria, ma'am, urticaria is related to stress or work pressure, although we have already discussed it, but still. Yes. As I've already told, urticaria or work-related pressure, it can stress can exacerbate your urticaria. We have Shiva Seni. I have been diagnosed for chronic urticaria. In a treatment, taking medicines for more than 1 year, itching became a big problem for me. Is there a permanent cure for this? As I told you, and these medicines will give you temporary relief. कि आपको पूरा दिन नहीं होगा, आपके 2 दिन पे निकल जाएंगे, but you might need to take these medicines for a longer period of time. It will go within a year, sometimes within 2 years. So that time period is not properly defined कि वो कब तक चलेगा. तो तब तक आप एक medicine लेते रहो. It won't bother you. Just take that medicine and take a chill pill. Right. We have Prasanjit Sengupta asking a very technical question, ma'am. What are the preferred molecules in chronic idiopathic urticaria? Chronic idiopathic preferred molecules are your non-sedating antihistaminics.
These non-sedating antihistaminics are the preferred molecules. There are some newer generation antihistaminics are available, like your belastin molecule is there, and some levocetirizine or desloratadine, along with montelukast. These are the common medications which are used to treat chronic urticaria. Dosage will be prescribed by your dermatologist depending on your need and how do you respond to those medicines. Dr. Bhumika, you initially said that, urticaria can start from one point and can go on covering, your body, etc. So my question is that can urticaria affect our internal organs as well? Any correlation? No, urticaria won't affect your internal organs, though it may be associated with certain kind of diseases. Like there are some autoimmune diseases. One thing is called as SLE. तो कुछ भी आपको अंदर ऑटोइम्यून डिजीजेस है उसके साथ अर्टिकेरिया एसोसिएटेड हो सकता है. तो अगर क्रॉनिक अर्टिकेरिया या आपको कोई और फीचर्स उस डिजीज से रिलेटेड आ रहे हैं तो डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करता है एंड देन दे विल ट्रीट यू अकॉर्डिंगली. Then other thing is chronic urticaria patients may have thyroid problems. कि उनको कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू हो सकता है तो यूजुअली एक थायराइड टेस्ट रिकमेंड किया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम इट एज सच देयर आर नॉट मेनी इंटरनल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट. ओके अच्छा, जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है स्पेशली क्रॉनिक अर्टिकेरिया के केस में, तो क्या बहुत सारे लैब टेस्ट भी कराने होते हैं? कोई ऐसी चीज जो जरूरी होती ही है, करानी ही होती है? सम जनरल टेस्ट्स आर यूजुअली रिकमेंडेड. लाइक अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन का पार्ट था depending on the precipitating cause of patient कि उनको कुछ infection था, कुछ sore throat था, then you can get a throat swab done. You can get some routine investigations like आपका complete blood count हो गया, आपका ESR हो गया, and thyroid autoantibodies, thyroid function test, thyroid autoantibodies, आपका stool और urine का examination. These are some common tests which we get done from the patient. शालिनी मेहरा is here asking, मैम क्या एलोवेरा में मैं डेली यूज कर सकती हूँ अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? और मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी डॉक्टर, कई बार जब स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो हम होम रेमेडीज की तरफ जाते हैं, एलोवेरा हुआ या दूसरी वो चीजें जो हमारे किचन में पेंट्री में इजीली अवेलेबल है, वो कितना सही है? कुछ चीजें आप सेफली यूज कर सकते हो जो हमारी दादी या नानी हमें बताती हुई जा रही है, बट अगेन देयर आर सम इरिटेंट्स आल्सो अवेलेबल. जो आपके होममेड रेमेडीज हैं उसमें काफी सारी चीजें इरिटेंट हो सकती हैं. तो जब तक वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है तब तक फाइन, बट समटाइम्स दे मे कॉज सम इरिटेंट रिएक्शंस. कि जो एलोवेरा जेल आप डायरेक्टली प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन यू डोंट नो कि कितनी कंसंट्रेशन में लग सकता है कितना नहीं. जब तक सूदिंग है ठीक है, समटाइम्स इट मे इरिटेट. आई गॉट सम पेशेंट्स जिनको एलोवेरा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, देन लेमन हो गया आपका या कुछ कॉस्टिक सोडा हो गया. सम पेशेंट्स दे अप्लाई सिनेमन आल्सो ओवर देयर फेस. सो दीज आर सम इरिटेंट केमिकल्स व्हिच you should definitely avoid using them. So some simple substances which you can use routinely are like curd, आपका ग्राम फ्लोर और बेसन हो गया, आपका हनी हो गया. These are some safe things which can be applied. Okay. And doctor, what are the most common mistakes that people with urticaria commit? आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे और आप उनको समझाइश देते होंगे कि अगर आपने ये नहीं किया होता या जल्दी मेरे पास आते तो शायद जो ट्रीटमेंट है वो कम समय में हो जाता. तो ऐसी कोई आम गलतियां? ऐसी कॉमन गलतियां जो पेशेंट्स करते हैं यूजुअली होता है कि कई बार वो इसी तरह की मेडिसिन लेकर आते हैं. या कॉमनली आप जब केमिस्ट के पास जाते हो, केमिस्ट स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं उनको. सो यू डोंट डायरेक्टली नीड स्टेरॉइड्स. आपको सीधा स्टेरॉइड्स पे जाने की जरूरत नहीं है. तो वो स्टेरॉइड से आपको डेफिनेटली बचना होगा. स्टेरॉइडल क्रीम्स आपको अर्टिकेरिया में हेल्प नहीं करती है. तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए डेफिनेटली बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ थेरेपी. या कुछ जो देसी नुस्खे होते हैं, कुछ देसी मेडिसिन होती हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ थेरेपी. Right. So it's important that, despite of wasting our times on self-medication or over-the-counter medication या chemist वाले भैया से पूछ के हमने ये ले लिया, ये सब करने की बजाय हम एक अच्छे dermatologist से मिले before it gets too late. So it's important we go to see our doctor immediately. We have Shivani Mishra. What is the root cause of urticaria? Though we have discussed it, but still anything that you would like to focus on?
I discussed quite in detail, like acute urticaria and chronic urticarias. Acute urticarias में, see, largely we are not able to identify any cause of urticaria. 60-70% cases के अंदर हमें कोई particular cause नहीं मिलता है शिवानी, but still we try to find out कि अगर आपका acute episode है तो कोई infection हो, किसी भी तरह का infection हो आपकी body के किसी भी part में, from your tooth to your private parts, आपका कुछ GI upset, even acidity की आपको problem बहुत ज्यादा रहती है, तो एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया यू माइट बी हार्बरिंग, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम कोरिलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करते हैं. And Doctor, now as we are moving towards the concluding part of this session, anything, any takeaway notes, anything that we missed on to discuss that you would like to share with our viewers? I think I have covered most of the part on urticaria. So urticaria से घबराओ नहीं आप, urticaria को treat करना चाहिए और urticaria को properly लो. हमारी common perception ये होती है, especially Indians में, कि डॉक्टर साहब कब तक medicines लेनी है मुझे, तो उस कब तक का जवाब chronic urticarias में देना मुश्किल हो जाता है. आपकी quality of life better हो रही है, then there is no problem in taking that single medicine which doctor is prescribing you and which you can take for a longer period of time safely without any side effects. So that will definitely help you out. आप less stressful रहेंगे और आपका urticaria hopefully जल्दी चला जाएगा. बाकी it may take sometimes 1 year, sometimes 2 years for some patients, or sometimes 2-3 years also. So definite time period is not defined in chronic urticarial patients. So just visit your dermatologist and take their guidance for how long you need to take those medicines, or whether you need to take them daily or on alternate basis. They will prescribe you accordingly. राइट, तो जैसा कि डॉक्टर भूमिका चौधरी ने कहा कि एक तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिगाड़ता है, तो उसे भी हम क्यों बिगाड़े जब ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो प्लीज गो एंड सीक द एडवाइस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट. और अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है तब भी अगर आप टाइम से इलाज शुरू कर देंगे तो उस स्टेज तक हो सकता है वो पहुंचे ही ना. तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं और वो परसिस्ट करते हैं तो प्लीज गो, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट मे एक्चुअली वर्सन योर कंडीशन. सो बिफोर इट्स टू लेट, प्लीज गो एंड विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर भूमिका चौधरी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, मैम. It has been a very informative session for our viewers, and I'm sure they'll use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptoms, they at least now know that instead of self-medication, it's always better to approach a nearby dermatologist. It was great hearing you. We really look forward for many more such sessions in coming times. Thank you so very much. It's all my pleasure. Thank you and take care, guys. Thank you. And viewers, thank you for your active participation in today's session. To get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page all about skin allergy. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye. Okay.